Hey, hi, hello, namaste ji, sat shri akal, assalamu alaikum. Do you remember the fight between Conor McGregor and Khabib? They are both boxers and they had a fight. और ना पता है क्या सीन हुआ था, उन दोनों का एक इंटरव्यू चल रहा था, उसके अंदर कॉनर मैग्रेगर आराम से विस्कियाँ ले रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया जब कॉनर मैग्रेगर ने खबीब के रिलीजन इस्लाम के ऊपर कमेंट कर दिया, और वो जो कमेंट पास हुआ ना, तो खबीब कुड नॉट स्टॉप हिम। सिर्फ जब तक खबीब के खुद के बारे में वो चीज़ें बोल रहा था, अंट शंट बकवास कर रहा था, तब तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ठीक है चल बोलता रहे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पर जब बात इस्लाम पे आई ना, तो उनसे रुका नहीं गया। और मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया। मुझे क्या लगता है यार, हम सबको पता है कि उन्होंने सही किया। आपके रिलीजन के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो आपको ना उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, अपने रिलीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। खैर फिलहाल जो अपन वीडियो देखेंगे ना, वो खबीब का वीडियो है विद विमेन्स। पूरे टाइम ही विल बी सराउंडेड विद फीमेल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज ही हैविंग, वो अपन देखेंगे। ही इज अ मुस्लिम नॉट ओनली बाय नेम, पर वो अंदर से एकदम प्रॉपर तरीके से इस्लाम को फॉलो करता है। तो व्हाट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी ही हैज, वो अपन एक्सपीरियंस करेंगे। नॉट ओनली व्हाट ही स्पीक्स, पर उनके जेस्चर्स, व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज ही हैविंग अराउंड वुमेन। साथ में बैठ करके इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बाद में कम्युनिकेशन होगी, उसके अंदर आ जाएगा, तो एंड तक देखिएगा, डोंट स्किप इट। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there, and I put reels over there daily. इससे देख करके आपके चेहरों पे हंसी आती है और मेरे दिल को खुशी मिलती है। It's the motherfucking Vivian, I have a question for people who want to get into the fighting industry and start a fighting career. What tips do you recommend, especially for a female? For female, I have very good advice. Be fighter inside your home. घर के अंदर भी लड़ना सीखना चाहिए। And I think, That's what he's saying. and one more advice. All the time finish your husband. Smash him really bad. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد He was not shaking hand यार, हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। عبرت عنها وبنيت المجد أقوادا When I get over there. All right, keep going. Yeah, did I say it right? Yeah, All right, you're awesome. You're my favorite New York City star. This way he's posing, he never shakes Keep the hands. video going, girls. It's going. All right, there you go. Thank you so much. I'm gonna come back. Because I took pictures of you on stage last night. I'm gonna print it and I'll give you a copy too. Thank you so much. I appreciate it. You're awesome. Thank you. Thank you, ma'am. I appreciate that. Excuse me. Those are which one do you want? No, I do, but I'm saying I'm gonna give you one. You want this one or do you want that one? Okay, you can have that one. I want these sides. No, you can keep that. If you want. Yeah, okay, cool. Did you get that? That's important. Thank you, though. That's awesome. Are you ever going to do like a class? Like where Yeah, that's fine. That's fine. No, but you keep this one. Okay. I want you to have that. He's so humble now. Helen Yee here with Eyes on the Game, and I'm here with Khabib. We're only 2 days away from arguably the biggest fight of your life for the UFC. I know the term interim has been thrown around, but from my understanding, you and Tony are kind of fighting for the lightweight title. So what does that title mean to you if you win? For me, it's a real title, because I have tough opponent, 9 win streak, I have 8 win streak, and for me, is this everything. I think this is a real title. Now, Tony has been talking and saying that he believes your record is padded and that you're a one-trick pony. I mean, what do you think about his comments regarding that?
I don't know. I think he's just talking. He have to say something because we're, like I think he just talking about this. I don't understand what you're talking about, but I feel confident about my skills, my record, my everything. That's why I fight for the title. If I have some fake record, why I'm here? Now, Conor McGregor's coach today, he did say that he believes that you will win against Tony this weekend and that Conor will fight you next. Do you actually think that Conor will come back and defend his title this year despite kind of everything going on regarding the Mayweather situation? I don't know. I don't think about him. Cornering Umlatov, Gamzatov to those victories. You've got Abu Bakr coming up. I mean, how do you think he's going to get on tonight? No, I'm very happy about this. I cornered 3 Dagestan guys, everybody win. Now it's turn to Abu Bakr. I think he's ready, he's very good shape. Now he much better training than last fight, and we hope we're going to knock this guy out. And look, he obviously on 0 points has to get the win to make it to the playoffs. What's he done differently? It's very important fight for him because if you want to compete in playoff, he have to finish opponent. Yeah. And that's why it's a little bit hard for about mental, but he's ready, and we have planned second round finishing. Okay, and obviously got to ask you about your own training camp ready for Conor McGregor. How's it going? How are you feeling? I feel great. I keep training here. Even I'm here, I training 2 times in day, and I'm very excited about this. And we have 8 weeks before fight, and I'm ready. I'm born ready. I'm born ready. I'm born ready. It's gonna be very good, inshallah. Если вас здесь, на тренировке, подскажите, пожалуйста, вы не могли бы прокомментировать, поделиться своими впечатлениями по поводу вчерашнего турнира? Вчера, конечно, турнир был очень хороший, особенно все бои были зрелищные, практически. Но мне больше всего понравился Рамиля Мустапаева. Соперник был очень хороший, Сергей Фалей. Я секундировал против Сергея очень многих бойцов, там Шамиля Заурова, там Саадулаева, очень многих бойцов. И я знаю, что очень крепкий парень, но он закончил его досрочно, и мне больше всего понравилось то, как он работал комбинациями, особенно в стойке, удивил в партере. Самое больше понравился Рамиль Мустапаев. Также на турнире выступал ваш брат Амар. Вы не могли бы прокомментировать его бой? Амар это довольно-таки молодой боец, таких как Амар у нас много, но у него есть большое будущее в плане того, что он очень усердно тренируется, вот это мне нравится, и он выполняет все инструкции, которые мы ему говорим, как до боя, когда мы готовим его, и как во время боя, когда он внутри октагона. Как вы отнеслись к тому, что у вас был отменен бой с Тони Фергюсоном? И насколько, на ваш взгляд, сильный боец Фокчер? С Тони мы должны были драться. Вообще, Тони, откуда ты знаешь? Я слежу за всеми боями UFC, поэтому... Я считаю, что он очень хороший боец, конкурентоспособный, может с любым подраться наравне. Он до сих пор у меня на прицеле, я думаю, что в будущем мы с ним встретимся. So, a little bit of a story time. Back in 2016, World Series of Fighting came to Kansas City. So one of our guys, Bobby Cooper, fought in the card, and I was cornering him. And he was fighting a guy that was under Khabib Nurmagomedov, and so Khabib was there cornering him with his team. And then, so normally after the fight finishes, the corner goes in, we shake each other's hands. We shake the fighter's hands. So I shook the opposing fighter, shook 2 of the coach's hands, but Khabib just completely ignored me. And at the time, I feel like a horrible person. At the time, I did not know that he was Muslim. So I just want to put that out there. So I didn't know he's Muslim, and he just completely ignored me. So I'm standing there while they're announcing the winner. I was like, wow, did I do something? Did I say something? I didn't think I didn't say anything to him, so it couldn't be I said something, he really just doesn't like me. Okay, this is weird. So they announced the winner. His guy won, our guy lost, so we were walking out the cage, and we shook everyone's hand again. I shook the coach's hand, and I went up to Khabib, and I was like, I'm just gonna shake his hand. I'm just gonna go up to him.
So I went up to him, I just grabbed his hand and shook it, and he looked at me like I had done the worst thing that I could ever do on the face of the earth. Oh God. And I remember thinking to myself, I was like, wow, he really doesn't like me. This is so weird. Okay. And I walked out, and then later on, someone told me that he was Muslim and that it was like a respect thing that they didn't shake other women's hands. And oh my goodness, I found that out. I felt like the worst person like on earth. I was like, oh my God, I feel like a horrible person. I just did what you don't do, and I felt so bad. And I remember like one of my friends a couple years later went and trained at AKA with DC and with Khabib, and he mentioned it to Khabib. He's like, no, like I remember, like tell her it wasn't I wasn't meant to be rude, like it was a respect thing, and like tell her not to worry about it and all that kind of stuff. But like I swear to God, like, so I'm glad that he is okay with it, but still to this day I feel like the worst fucking person for doing that. But yeah, like that's my story about meeting Khabib Nurmagomedov, and yeah, it's something that I probably won't ever forget. What? It was so good. Like खबीब को देखते हुए तो 10 मिनट कब निकल जाए पता ही नहीं चलता है ना. एंड में जो मोहतरमा आई हुई बोल रही थी कि उनको जब वो खबीब से मिली उन्होंने बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स फाइटर्स के हैंड शेक करे और उन्होंने ही नोटिस करा कि खबीब उन्हें टोटली इग्नोर कर रहे हैं, तो वो खुद से गई उनके पास और उन्होंने ग्रैब करके उनका हैंड पकड़ करके शेक कर लिया, हाथ मिला लिया. और उसके बाद खबीब ने उन्हें बोला कि आई फील लाइक द वर्स्ट पर्सन, आई फील लाइक आई हैव डन द वर्स्ट थिंग एवर इन माई लाइफ ऑन द फेस ऑफ अर्थ. उनके खुद के कुछ उसूल हैं और वो एकदम से ब्रेक हो गए. अपन ने क्लिपिंग्स देखी ना सारी, जिसके अंदर खबीब वाज लाइक जैसे ही कोई औरत आकर के उनसे हैंडशेक करने वाली होती ही कंप्लीटली डिनाइज इट और वो उनको बोल देते हैं, कन्फ्रंट कर देते हैं कि देखो यार मैं ना ऐसे हाथ वाथ नहीं मिलाता हूँ. पर इधर कुछ अलग हो गया 2016 के अंदर. अपने रिलीजन को फॉलो करना व्हेन यू आर सराउंडेड विद सो मेनी टॉक्सिक एंड नेगेटिव थिंग्स अराउंड, क्योंकि आजकल यार बहुत मुश्किल हो गया है ना. आप अपने रिलीजन को अगर फॉलो करते हो, बहुत ज्यादा अपने धर्म के बारे में बात करते हो तो लोग बोलते हैं अरे क्या अभी तो तू यंग है, अभी तेरी उम्र कहाँ है ये सब करने की. बट डिस्पाइट ऑल दिस, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड, टॉप मोस्ट पोजीशन पे है इंटरनेशनली, तब भी ही इज प्रमोटिंग इस्लाम एंड दैट्स ग्रेट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो मैंने बोला था कि वीडियो अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो साथ में बैठ करके समझेंगे. तो इस पूरे वीडियो के अंदर बेसिकली यही था कि वो किसी औरत की तरफ देखते ही नहीं है, गंदी नजरों से तो बहुत दूर की बात है, वो आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देखते हैं. सो आई होप आपको ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा. मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख करके. मुझे एक्चुअली शौक हो रहा है कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने रिलीजन को इतने अच्छे तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं. So a big salute to all the people who are like this. And आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. इस तरीके के और वीडियोस एक्सपीरियंस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फुल ऑन सपोर्ट करिएगा. सपोर्ट मतलब शेयर कर दो वीडियोस को, कमेंट कर दो, लाइक कर दो. और ना मुझसे अगर आपको मिलना है, अगर मैं आपको अच्छी लगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. मैंने लिंक दे रखा है उसके डिस्क्रिप्शन में. मैं बेसिकली वहाँ पे कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कॉमेडी करना. मैं फनी इंसान हूँ. अच्छा चलो ठीक है यार, बहुत सारी बातें हो गई. लव यू सो मच. Bye.